warahmatullahi wabarakatuh. We are live again. My name is Ibra. Okay, that's my son's name. My name is Fareed Ahmad, and we have brother Ahmad Khan with us. Ahmad, a lot of people don't really know you. I found you a hidden gem. Okay, right? So, will you like to introduce yourself, who you really are? आप हैं कौन? जरा ये तो बताएं. Um, Assalamu alaikum warahmatullah. वालेकुम. Who can, I'm just a regular person like everyone else who has this love for Allah's religion and who has been spending some time trying to learn, trying to seek knowledge. I've been involved in dawah for a number of years now, and currently I work for a dawah organization that is based in Saudi Arabia. That is just a brief introduction about myself. वैसे मैं in terms of my secular education, I have a master's in international law, and I lived in the UK for about 6 to 7 years. That's where I went to university. तो ये एक आप कह लें brief सा introduction है मेरा. I'm generally not very involved in the dawah scene locally in Lahore. I am involved, but not online too much. मेरी job जो है वो online है, and I have a lot of youngsters who I teach sort of on a weekly basis, but it is only in private gatherings. For example, at my place, I have a group of students who come and we study different things. Okay, so this was your introduction. Can you just tell me a little more, the audience, a little more about the organization you are working at, और किस तरह के questions आपके पास आते हैं? Is it an Islamic organization? Because as we discuss later, काफी non-Muslims के questions आप address करते हो. और जरा मुझे ये भी बताओ कि आपका जो seeking knowledge का journey है, because you are one of the other person who graduated from Lakas. राइट वो जो आपका सीकिंग नॉलेज का जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ और कब हुआ स्टार्ट? अच्छा, so if someone is thinking why I'm not facing the camera, it's because मेरा जो लैपटॉप का जो webcam है वो साइड पे और मगर मेरी स्क्रीन जो है मेरे सामने. I've got two screens, so one's over here, one's over here. मगर so that's why I'm not looking into the camera. With regards to my work, मैं जिधर जॉब करता हूँ जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो the organization is based in Riyadh, Saudi Arabia, and it comes under the Dawah al-Irshad project of the Saudi government. It's sort of semi-government, and basically we have about a number of websites that are Dawah websites. The main website is called islamreligion.com. So उनके लिए मैं काम करता हूँ और हमारा काम basically is dawah aimed at the non-Muslims. Okay. So we have people from all over the world who come and ask us questions on live chat. So we answer their questions, and the chats are in different languages. So that is basically the sort of work we do. And alhamdulillah, we have a lot of people that convert with us to Islam. There's a huge number of people who convert. Alhamdulillah. With regards to my journey in seeking knowledge, it started very late, unfortunately. मैंने अपना A-levels किया था 2005 में, and after that I went to the UK for university. So I basically started seeking knowledge when I finished university, when I was about around 24, going on 25. This is back in 2010, so 10 years ago. So that is how I started. I was moving between the UK and Lahore. So some of my teachers were in the UK and London. उनके साथ में पढ़ा और फिर कुछ थे जो इधर थे जिनके साथ मैंने कुछ पढ़ा. Alhamdulillah. Okay, if there's anyone watching us, please let us know कि आपको clearly हमारी voice आ रही है नहीं. I don't think so there's any problem. Okay, so this is your journey, right? And it has been 10 hours.
How much time does it really take for a person to have foundations of religion or to understand? I mean, is जो knowledge है, you can't measure it. It's something that is intangible. But what do you think? What's your rough idea कि एक बंदे को इतनी समझ दीन की कब आ जाती है कि उसे कोई स्लिप ना कर सके या कोई उसे किसी राइड पे ना लेके जा सके? देखिए, आपकी बात ठीक है कि इन टर्म्स ऑफ नॉलेज यू कैन नेवर एवर हैव इनफ नॉलेज एंड दिस ऑल यू आर ऑलवेज लर्निंग। सो जैसे मैंने जब पढ़ना शुरू किया था तो मैंने अपने जहन में ये एक आइडिया बना लिया था कि ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस होगा, कंटिन्यूइंग जर्नी होगी और मेरे लिए पर्सनली ये कभी ख़त्म नहीं होगी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ख़त्म नहीं हुई। सो आई डू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम with books and with listening to lectures, visiting my teachers, asking them questions. So those sort of things never end. So you keep building on what you know, and once you know something, you start asking questions and broadening your horizon and start looking at other things as well. तो वो तो कभी जर्नी खत्म नहीं होती। जहाँ तक आपका सवाल है कि कितना इल्म जो है वो किफ़ायत करेगा, किफ़ायत in the sense कि it will allow you to practice your religion. In terms of allowing you to practice your religion, then it's not very complicated, and we shouldn't make seeking knowledge or Islam a complicated thing. It's very very simple. अल्लाह ताला का दीन जो है बहुत आसान है। आपको चंद चीजें पता हो तो आप अपने दीन पे अमल कर सकते हो। तो but the times we are living in, these are times where we are being bombarded with all sorts of theories and philosophies and doubts and shubuhat. Because of that, you might need much more grounding in your religion than you would have needed had we been living in a society where we weren't being exposed to so much fitan. Okay, so let's go. Let's dive into the topic straight away. हमने जब सुबह डिस्कस किया तो तुमने डिस्कस किया था that we are going to discuss what are the practical ways of seeking Islamic knowledge. और उसकी ये रीज़न ये है कि हम डिस्करेज कर रहे हैं किसी को आई मीन the topic in the mind was that a lot of us are busy in our daily routine. Now we have different roles. कोई bread earner है, कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, किसी ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, उसकी डेडलाइन आ रही है, फिर किसी ने जॉब करनी है, और पीपल रियली बिकम वेरी बिजी। और फिर जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता होता कि किस शयूख से जाके मैंने क्या पढ़ना है या क्या समझना है। आई मीन ये तो हमारा एक रिलीजियस सर्कल है, वी आर कनेक्टेड विद स्कॉलर्स। लेकिन अगर पाकिस्तान की मेजोरिटी हम देखें, व्हाट दे थिंक इज कि जो टेलीविजन पर आता है वो बंदा स्कॉलर है, ओके। और जो टीवी पर आ रहे हैं, जो जियो पर आ रहे हैं, एक्सप्रेस पर आ रहे हैं, किसी भी टेलीविजन चैनल पर आ रहे हैं, ही इज अ स्कॉलर and he has the ability to answer all my questions. From that person, maybe he is in A levels or in FSC. Okay, let's start from a child. For instance, someone is in grade 6, grade 7, grade 8. उसको कैसे पता चलेगा कि उसके जो दिमाग में डाउट्स हैं उसका आंसर किससे जाके मैंने डिस्कस करना है? बिकॉज ही कांट अप्रोच हिज पेरेंट्स। क्योंकि अगर पेरेंट्स को अप्रोच करता तो डाउट्स इन द फर्स्ट प्लेस आते ही ना। लेकिन पेरेंटिंग का लेवल काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया है। वो किससे जाके डिस्कस करे? देन विल मूव फॉरवर्ड विद मोर क्वेश्चंस इंशाल्लाह। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम ये तयन कर लें कि हम बात किन लोगों की कर रहे हैं और किस किस्म का सीकिंग ऑफ नॉलेज वाली बात हो रही है उधर। देखें, आई पर्सनली वांट टू एड्रेस पीपल who are not so committed that they're going to leave everything and go to places like Al-Azhar or Medina or Qura and spend 6 years over there and come out as people who are very well versed in their religion and people Okay. who have dedicated their lives to seeking knowledge. उन लोगों के बारे में मैं बात नहीं करना चाह रहा बिकॉज वो बहुत छोटी एक परसेंटेज है हमारे यहाँ, और जो है भी उनको पता उन्होंने क्या करना है। जो मेजॉरिटी लोग हैं वो हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या इस वक्त भी जॉब कर रहे हैं, मगर वो साथ साथ चाहते हैं कि वो उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन हो अपने दीन के साथ और इस लेवल की उनकी नॉलेज हो कि वो
ये शुबुहात और डाउट्स, या पर्सनली उनको शुबुहात और डाउट्स नहीं भी होंगे, मगर वो दीन की कुछ हद तक खिदमत करना चाहती हैं, इन द सेंस कि वो दे वांट टू maybe teach or want to bring people closer to Islam. तो उस किस्म के लोगों के बारे में बात हो रही है। तो जहाँ तक आपने कहा कि यंगस्टर है, who's about क्लास 6, 7, 8 में है वो, उसके लिए पहला मदरसा तो उनके लिए उनके घर वाले ही होंगे। और बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है कि पेरेंट्स रिकग्नाइज करें कि वो जो है वो फर्स्ट इन्फ्लुएंस होंगे। हाउएवर अगर उसको वहाँ से अपने रिलीजन का नहीं कुछ पता लग रहा, उसको दीन का इल्म जो है उस तरह नहीं मिल रहा, तो फिर उसको चाहिए कि देखिए हर किसी हमारे हाँ, हर किसी की हम लोग बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, हर किसी के कज़िन्स हैं, दोस्त हैं। So, try to figure out who you think is sound in terms of his religion and his practice of the faith. आपके रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, उनसे आप मशवरा करना शुरू करें। Online, there is so much out there online that it can confuse a lot of people rather than help them. तो मेरा मशवरा होगा कि वो अपने इर्द-गिर्द देखें कि उनके इर्द-गिर्द कौन है इस तरह का जो दीन को प्रैक्टिस कर रहा है और उनके नज़दीक वो दीन को समझता है। ज़रूरी नहीं है वो हर चीज़ समझेगा दीन के मामले में, मगर उनके लेवल के लिए कुछ हद तक उनको वो समझा देगा, बता देगा, और जैसे एज़ दे ग्रो अप दे फाइंड मोर एवेन्यूज़ ऑन फाइंड गाइड्स हू कैन हेल्प देम। दूसरा हमारे यहाँ ये नौजवान काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ क्लब के अंदर हैं, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क। आप भी यहाँ, हम लोग भी इधर यहाँ पे इस यूथ मैटर्स के प्लेटफॉर्म के ज़रिए यहाँ पे कुछ कोशिश कर रहे हैं अपनी। तो दे कैन गेट इन टच विद अस एंड आई एम श्योर दे कैन मैसेज दिस पेज There ओवर are a lot of organizations that भी बहुत अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स करा रहे हैं। उनकी टर्शियरी लेवल की कोर्सेज होते हैं पूरे पूरे डेज की। फिर कुछ स्कॉलर्स हैं जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। Okay, so what I want to discuss right now is मैं आपको सारे टॉपिक्स बता देता हूँ so that you have a frame of things in your mind. सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस करना था कि एक नॉर्मल बंदा for from the age bracket of from 18 till 26. Okay, let's keep this age bracket 18 till 26. उसको कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, उसको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, और कोई भी बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दे लेकिन पर्टिकुलर बुक्स पढ़नी चाहिए। उसको कौन कौन सी फील्ड्स की बुक पढ़नी चाहिए, शुड ही बी रीडिंग ओनली कुरान और अहादीस, या उसको फील्ड डिफरेंट फील्ड की या डिफरेंट साइंसेस की बुक्स पढ़नी चाहिए। फिर कौन सी साइंस किससे पहले पढ़नी चाहिए, बिकॉज I've seen a lot of people जो सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री में खिलाफत के बाद क्या हुआ उसी की हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाते हैं अबाउट डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट सिनेरियोज। और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स कब समझने चाहिए, जितने भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं उसका क्या स्टेज आनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 5 साल अकीदा ही पढ़ते रहते हैं और कुछ पढ़ते नहीं। क्या बेसिस है, व्हाट्स दैट बेंचमार्क जिससे उन्हें पता चलेगा कि ये क्या है, और कैसी जर्नी होनी चाहिए एक बंदे की जो इस्लामिक नॉलेज हासिल कर रहा है और उसको कैसे एक्शन पे लेकर आए। So these are some of the things that I wanted to discuss with you. So let's take one step at a time. For instance, I'm a very secular person और मैं गाने सुनता हूँ, मूवीज देखता हूँ नेटफ्लिक्स पे। But now मैंने कुछ दुरूस अटेंड किए हैं and I really wanted to seek knowledge, right? But I have only limited time. I have 2 hours a day, or maybe I have 30 minutes a day. What should I do right now when I don't know anything? अच्छा फरीद, इसमें ना दो पार्ट्स हो सकते हैं। एक पार्ट Okay. जो है फॉर एग्जांपल आपको उलमा जो बताएंगे, और उलमा जब बताएंगे ना आपको एक पार्ट, वो अपने ज़हन के अंदर उसको उस रास्ते पे लेके जाने चाहते हैं जहाँ पे वो प्रॉपर एक तालिबुल इल्म बने और उसके अंदर प्रॉपर ग्राउंडिंग हो। मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा अभी। Right. मैं बात करना चाह रहा हूँ हमारे जनरल मैसेज, जो हमारी जनरल यूथ है उनके लिए, कि उनको इतना उनको दीन के बारे में इतना पता हो कि वो इसको
बरकरार रख सकें अपनी ज़िंदगी के अंदर और अपनी बाकी रोज़मर्रा जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी वो 5 वक्त नमाज पढ़ते हों, नमाज को समझते हों, कुरान पढ़ सकते हों, कुरान को कुछ हद तक समझते हों, यानी ये इस लेवल के ऊपर, और फिर उसके ऊपर दे सीक नॉलेज टू ए फेयर डिग्री जहाँ पे वो कंफर्टेबल हैं एज मुस्लिम्स, ठीक है, कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट। तो इस किस्म के लोगों के बारे में ना मैं बात करना चाहूँगा। तो शुरू में देखिए, अब हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मैंने अपने अंदर भी महसूस किया था व्हेन आई स्टार्टेड आउट, एंड दैट आई सी अराउंड माई सेल्फ एज वेल अभी। और ओके। वो ये है कि देखिए, हमारी बुनियाद जो है ना वो कुरान है, ठीक है, और ये क्लीशे नहीं है, ये वाकई में ऐसे है कि कुरान हमारे लिए सबसे अहम किताब होनी चाहिए। हमारे यहाँ देखा ये जाता है कि बहुत ज्यादा लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता। जब मैं कुरान पढ़ रहा हूँ उसकी तिलावत नहीं कर सकते वो, ठीक है, तजवीद, बेसिक तजवीद जो है, दे आर अनएबल टू रिसाइट द कुरान प्रॉपरली, एंड इन माय ओपिनियन दिस इज अ ट्रेजेडी। एंड जितना आप इसको डिले करते हो अपनी सीकिंग नॉलेज की जर्नी के अंदर कुरान को सही तरह पढ़ना, उतना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक हो सकता है टाइम आए कि आपका कभी भी तलफ़ुज़ और तजवीद और मखारिज वगैरह ठीक नहीं होंगे। तो मेरे ओके। नज़दीक इसकी काफ़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखिए, आपको जितनी मर्जी अहादीस का पता लग जाए, आपको जितने मर्जी उलूम तफसीर सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन हो आपके ज़हन के अंदर, मगर आप किसी के सामने 2 सफ़े कुरान के सही तरह ना पढ़ सकें, तो वो उस नॉलेज का, उस इंफॉर्मेशन का वो खास फ़ायदा नहीं है। आई एम नॉट बिलिटलिंग कि वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ये एक बहुत ज़रूरी और अहम चीज़ आपने छोड़ दी है, तो इसको पहले करें। अब देखिए, हमारे यहाँ जैसे जब हम छोटे होते थे तो क्या होता था कि कारी साहब रख लेते थे, घर आते थे कारी साहब, हम 5-10 मिनट उनसे पढ़ते थे, फिर भाग जाते थे। उसके बाद हमें कुछ नहीं कभी पढ़ना आया, कैसे पढ़ना कैसे नहीं पढ़ना, जिस तरह उर्दू पढ़ते हैं उस तरह हम कुरान पढ़ते थे। तो हम्म। ये पहली रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आपने कम अज कम इस लेवल के ऊपर तजवीद कुरान जो है ना सीखना सीखना है। जो हमारे भाई हैं जो अब उनकी एज 20, 25, 22, 23 इसके अंदर है, तो उनके लिए इट्स इसेंशियल कि वो अभी शुरू करें। और ओके। हमारे यहाँ बड़ा ईजी है ये करना। ईजी कैसे है, आप एक अच्छा कारी जो है वो ढूंढें, उनको आप एक अच्छी तनख्वाह दें, उनसे क्या हमारे घर आके जी मुझे कम से कम आधा घंटा रोज का पढ़ाएं। You know, we have this facility in our country. And we can afford to pay someone like that. तो तजवीद जो है कुरान को पढ़ना सही तरह, वो बहुत ज़रूरी है। हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे टाइम में आ गए हैं कि a lot of people put a lot of emphasis on understanding the Quran, which is good, which is important. आप understand करें कुरान को, तर्जुमे के साथ पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, मगर don't lose the ability to be able to recite the Quran. तो ये चीज़ जो है ना हमारे यहाँ कुछ अनफॉर्चुनेटली तजवीज नौजवान, तजवीज सीखने के ऑनलाइन रिसोर्सेज भी होंगे। आई एम श्योर होंगे, मगर आई वुड नॉट इनकरेज दैट। अगर कोई इंग्लैंड में होगा ना और मुझे पूछेगा कि तजवीद सीखने के ऑनलाइन रिसोर्सेज है, मैं कहूँगा हाँ, आप वेबसाइट पे जाएं, स्काइप पे बैठें। भाई यहाँ पे तो आपको बहुत आराम से और आसानी से कुरान मिल जाएंगे जो इंशाल्लाह आएंगे और आपके लिए वो करेंगे, आपको पढ़ाना Okay, कुरान we पढ़ाना have सिखाएंगे। Musab over here and Hisham and Musab, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक ऑनलाइन रिसोर्स अगर आप यूज करते हैं ना तो उसमें ये एक डेफिसिट चीज रह जाती है कि जब आप रिसाइट बैक करते हैं कुरान को तो देयर इज नो वन टू करेक्ट यू। आपको समझ तो आ जाती है, उसके कवानीन भी आ जाते हैं, लेकिन जब आप उसको रिसाइट खुद करते हो सो देयर इज नो वन टू एक्चुअली रेक्टिफाई कि आपने क्या पढ़ा, आपने ठीक पढ़ा या गलत पढ़ा। ओके, सो हाँ, दूसरा ये जो रेगुलरिटी आती है ना उसके अंदर कि आपके घर कोई आ रहा है बाकायदा आपको पढ़ाने के लिए, तो वो ज़्यादा आई थिंक आसान भी है और उसका फ़ायदा भी ज़्यादा, और हमारे यहाँ ये चीज़ अवेलेबल है तो उसको अवेल करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को। ओके, चले, अगर तजवीद सीख ली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कितना पार्ट कुरान का याद करना चाहिए? देखिए, ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, मगर मेरे ख्याल से जुज़ आम्मा जो है ना, यानी 30वां पारा जो है ना, 30th पारा, वो anyone who's serious about their religion, they should make an effort to memorize the 30th juz of the Quran, because it's got 36 surahs. उस पारे के अंदर इतनी सूरतें हैं और किसी और पारे में नहीं है। तो 36 सूरतें जो हैं आप याद कर लोगे अगर आप जुज़ आम्मा सिर्फ याद कर लोगे। एंड इट इज़ वेरी इजी। सम पीपल थिंक कि वो पूरा पारा याद करना बड़ा मुश्किल है। नो, इट्स वेरी वेरी इजी। Once you are able to recite the Quran
it's easy, inshallah, to uh, memorize these short surahs, and then you can, अगर अगर आप use them मुझे in your सिर्फ salah. 30 अगर आप मुझे सिर्फ 30 सेकंड्स में कुछ टिप्स बता दो अबाउट मेमोराइजेशन ऑफ कुरान। देखें, मेमोराइजेशन का जो सबसे बड़ी जो टिप है वो है रेपिटेशन। ओके। ठीक है ना, तकरार। जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना आसानी से आपको याद होगा। शुरू शुरू में हो सकता है आपको 3-4 लाइनें याद करने में 15-20 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, मगर देयर विल कम अ टाइम, once you start memorizing, there will come a time when you will be able to memorize a page easily in 15-20 minutes. तो रेपिटेशन जो है ना, इट्स वेरी बेनिफिशियल। दूसरी बात, तजवीद सीखने में और कुरान से इतना पढ़ने में आपको ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं कुर्रा की, ये बहुत हेल्पफुल होंगी। So, ओके। for example, if you choose someone like Minshawi, and his recitation, his tajweed is very, very good. You listen to it, you concentrate on how he is pronouncing those letters. So, it can really, really benefit you in learning how to recite properly. मुझे याद है, when I started out, for me in my journey, it was very, very important to recite the Quran properly. मैं आपको छोटी सी एक, if we have time, I can. Okay, we have time, inshallah. So I'll share a small personal story with you on when I started to recite the Quran. So when I was in England, and this is around 2010, there was this institute, और अभी भी इंस्टीट्यूट है, काफी बड़ा हो गया, तय्यबुन इंस्टीट्यूट के नाम से, लंदन के अंदर। एंड इसके अंदर ना मदीना यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स थे काफी ज्यादा जो पढ़ाते थे। सो मेरे अंदर ये डिजायर थी कि आई वांट टू बी एबल टू रिसाइट द कुरान प्रॉपर्ली, तजवीद और मखारिज उन चीजों के साथ। सो आई वेंट टू देयर सेंटर, एंड आई टोल्ड देम कि मैंने कुरान पढ़ना सीखना। तो उन्होंने ना अपने जो डेस्क था उसके ऊपर ना एक पेपर चिपकाया हुआ था, उसके ऊपर 3 आयात लिखी हुई थी कुरान की। तो वो जो भाई बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये आयात पढ़ के सुनाओ मुझे। तो मैंने अपनी तरफ से पढ़ी, तो उन्होंने मुझे ना बिल्कुल जो बिगिनर से भी पहले वाला लेवल था ना, उसमें मुझे कहा कि आप इसको ज्वाइन करें। मैंने कहा ठीक है। सो आई स्टार्टेड दोस, इट वाज ए 1 डे अ वीक क्लास, 3 घंटे की क्लास थी, हफ्ते में 1 दिन। हमारे जो उस्ताद थे वो अल्जीरिया से थे। उसके बाद फिर एक मोरक्कन आ गए थे, शेख अब्दुल्ला स्वीटी। तो उन्होंने क्या किया, पहले दिन क्लास में, अब आई स्टार्टेड टू टॉक टू the students in the class, and most of them were non-Muslims who were converted to Islam. There were very few born Muslims, and there was a brother who was a born Muslim from Egypt. I don't remember his name now. तो हमारे उस्ताद ने क्या किया, उन्होंने ना सारों को पेयर्स में ना बना दिया कि यार ये दो ये दो ये दो ये दो। He made pairs of each of us, and he said he told us to recite half a page to your partner. He will make corrections for you, and then he recites to you, and you make corrections for his recitation. तो होना ये ऐसे हुआ कि मेरे साथ जो लड़का, जो मेरा पार्टनर बन गया था, वो इजिप्शियन मुसलमान था, एंड उसका लेवल जो था ऑफ रेसिटेशन वाज मच बेटर देन दिस बिगिनर लेवल। ठीक है। सो ही व्हेन हिज टर्न केम टू रिसाइट, उसने तो बड़ी जल्दी 5 जो सफ़े है ना, आधा सफ़ा जो है ना, बड़ी 5 लाइनें आधा सफ़ा या 10 लाइनें थी, वो बड़ी जल्दी उसने जो है ना वो पढ़ ली। जब मेरी बारी आई, फरीद, आई कुडंट रिसाइट 3 words with him correcting me. बार बार मुझे वो टोक रहा था, इतना ज्यादा कि मेरे से 2 लाइनें भी नहीं पढ़ी जा रही थी। एंड दैट वाज वेरी वेरी डीमोटिवेटिंग फॉर मी कि यार ये या तो मैंने उसको बताया, आई एम अ बॉर्न मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान, और ही इज हैविंग, आई कांट इवन रीड 1 line ऑफ द कुरान। तो आई स्टक विद दैट कोर्स, और उस कोर्स ने मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मगर मुझे याद है जिस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो ये था कि मैं कुरान खोल के बैठ जाता था सुबह सुबह, एंड मैं किसी कारी की जो है ना रेसिटेशन लगाता था, एंड आई वुड जस्ट फॉलो एंड ट्राई टू रीड अलोंग। ओके। सो दैट इज समथिंग दैट कैन बेनिफिट यू एज वेल। मगर आप अगर यहाँ पे हैं, पाकिस्तान में हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, एक आप टीचर रखें, एक कारी रखें, अच्छा कारी जो पढ़ सकता है, or you basically spend time with him, and you'll be surprised how quickly inshallah you will learn.
मैंने कुछ और भी लोगों में नोट किया है, एक्चुअली हमारी रूटीन्स इतनी बिजी हो गई हैं कि हमने कुरान को बिल्कुल अबैंडन कर दिया। और ये रियलिटी है, सिर्फ उन लोगों की रूटीन्स बिजी नहीं है जिनका कोई रिलीजियसली इंक्लाइंड नहीं है। Even a person like me, I'm religiously inclined in some way, right? But sometimes it's very hard for you to spend a lot of time on the recitation of Quran. और what I would like to add is कि कुछ लोग सिर्फ लिप्स अपने हिलाते हैं लेकिन उनके वोकल्स नहीं हिलते कुरान पढ़ने से। ओके, सो दिस समथिंग कि कुरान खुला हुआ है और बस वो लिप सर्विस कर रहे हैं, ऑल्दो पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन जब तक वो अपने वोकल्स नहीं यूज करते तब तक रेसिटेशन उनकी बेहतर नहीं होगी। ओके, हाँ सो मूविंग फॉरवर्ड, जी जी, हाँ, इफ यू लाइक। बेसिकली अगर आपने प्रैक्टिस करना कुरान पढ़ना तो आप ऊंचा पढ़ें ताकि या आपको कम से कम आवाज आ रही हो, यानी यू हैव टू रीड आउट अलाउड। ओके, so once a person learns the recitation of Quran, जो आपने कहा कि it's quite easy, translation उसकी वो कैसे सीख करे या उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे करे? अच्छा, ट्रांसलेशन जो है कुरान की, a lot of people ask me कि which translation is the best, and that is a very difficult question because no translation can be uh, perfect. तो मैं उनको हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जो मेन स्ट्रीम ट्रांसलेशन है उनमें से कोई भी वो चूज कर लें एंड दे स्टार्ट रीडिंग इट। अब there's two schools of thought here. There are some Okay. people who say कि यार बिल्कुल भी कुरान खुद ही पढ़ना चाहिए और आपको समझ नहीं आएगी and you might take out wrong conclusions, so you just stick with the teacher, don't open the Quran yourself. मेरा मेरा नज़दीक वो एक एक्सट्रीम है, और दूसरी एक्सट्रीम ये है कि यार मैं खुद ही बैठ के कुरान पढ़ूंगा, मुझे कोई तफसीर की जरूरत नहीं है, मुझे किसी आलम की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पढ़ूंगा, मुझे कोई अहादीस की जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ आ जाएगी, इंग्लिश में लिखा है, मुझे इंग्लिश आती है। So the truth lies in between these two extremes. So I would suggest कि anyone take any one of these translations, ठीक है, and just start reading them. उससे आपको कुरान का ना एक बहुत जनरल आइडिया मिलेगा, एक जनरल जो मैसेज है ना वो आपको मिलेगा कुरान का है क्या, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपको पहले ही पता है क्योंकि आप एक मुसलमान सोसाइटी में रहते हैं। To sort of go up a level in your understanding of the Quran and its tafsir, you would need a teacher. और ये मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं लोगों के लिए मुश्किल और कॉम्प्लिकेट करना चाह रहा हूँ बातें, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वाकई में एक नीड है कि आपके पास कोई उस्ताद हो जो आपके सवालों का जवाब दे सके कुरान के मामले में। तो with regards to tafsir and understanding the surah of the Quran, ऑनलाइन रिसोर्सेज काफ़ी हैं और वो अच्छी भी हैं। कुरान कुरान की एक बात है कि कुरान में इख्तिलाफ उलमा का कम है, तो इसलिए it's easier to understand it and get resources that would really help you कि आप खुद काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछने लगा हूँ, नॉट टू ऐड कंट्रोवर्सी टू इट, लेकिन ताकि लोगों को समझ आ जाए। A lot of the youth are inclined towards the tafsir which Noman Ali Khan does. Okay, and that is really very good. I mean, I like Noman Ali Khan. I've met him. I don't have any problem in someone listening to Noman Ali Khan. एज लॉन्ग एज इट इज करेक्ट, राइट? क्योंकि गलतियां तो हर बंदा कर सकता है, तो जब तक कोई सही तफसीर कर रहा है या सही लिंग्विस्टिक कर रहा है उसकी मीनिंग, दैट्स ओके। लेकिन जब आप कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, आपको उससे क्या क्या ड्राइव करना चाहिए, एक्सट्रैक्ट करना चाहिए? शुड यू एक्सट्रैक्ट फिक आउट ऑफ इट? शुड यू एक्सट्रैक्ट द हिस्टोरिकल मोमेंट्स बोली जो वही उस पर्टिकुलर सिनेरियो पे नाजिल हुई, वो करना चाहिए? शुड यू एक्सट्रैक्ट द लिंग्विस्टिक मीनिंग आउट ऑफ इट? क्या चीज एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए जब कुरान की तफसीर पढ़ रहे हैं? देखिए, अगर आप तफसीर यहाँ पे बात नहीं हो रही, तर्जुमे की बात हो रही है। अगर आप तर्जुमा पढ़ रहे हैं कुरान का, हाँ जी, या अगर आप तर्जुमा पढ़ रहे हैं कुरान का और लेट्स से आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तर्जुमा, तो यू आर वेरी लिमिटेड इन व्हाट यू कैन एक्सट्रैक्ट ऑफ बेनिफिट। लिमिटेड इन द सेंस कि जो कुरान की आयात सरीह है ना, या एक्सप्लिसिट, you will be able to obviously understand them. Qul huwa Allahu ahad, say Allah is one, ठीक है, this is very clear, very explicit, तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी।
things like that, you will be able to very clearly extract and learn. जहाँ तक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग आउट रूलिंग्स, तो रूलिंग्स तो बहुत मुश्किल है कुरान से अखज़ करना सिर्फ एक तर्जुमे के साथ. even सहाबा, फॉर एग्जांपल सूरह बकरा में आयत है about fasting कि you stop the fast when وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. So the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala says that you stop fasting when the white thread is distinct from the black thread of dawn. So if you just have the translation with you, you're unable to understand what this really means. इसी तरह मैं एक और मिसाल काफ़ी कॉमन है in terms of in Surah Baqarah, Allah says وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ عَنِ الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. So Allah says about the menstruating women that وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, that do not go near them until they have become purified. Okay. So if you have a translation, it's telling you do not go near them, taqrabu, करीब भी ना जाओ उनके, hatta yathurn, until they have become purified. Now we know in Islam that we can go near them, we can touch them. What has been prohibited is very clear from the hadith. Okay? So you need that background, and the Quran itself is not sufficient in order for you to derive rulings from it. Okay, now before we go to the tafsir part, I would like to add the comment of Hisham. Hisham ne kya kaha hai? Hisham is saying that there was something I would like to add. When I was memorizing the Quran, initially I memorized a few juz through listening to Sheikh Muhammad Jibreel, Abu Bakr, and many other Saudi Imams. So, और उसने एक और link add किया that listening not only helps with pronunciation, it also helps you with memorizing if you are having difficulty memorizing a chapter. So Hisham agrees to what you have said. बिल्कुल ये I remember myself, मैंने जुज़ामा याद किया था सिर्फ सुन के शुरू में. I heard it so many times that it was very easy for me to memorize it. So yes, listening, hearing, does facilitate memorization. आपने Okay. नुमान अली खान का एक you mentioned नुमान वो अली मेरा खान. ख्याल है तफसीर में डिस्कस करते हैं. Okay, so let's come to तफसीर now. अगर किसी बंदे ने तफसीर ऑनलाइन सुननी है YouTube चैनल के, he's a prominent शेख, right? किसी भी कॉन्टिनेंट से हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूके, यूएसए, कोई भी हो, राइट? किस क्राइटेरिया पे उसकी तफसीर सुननी चाहिए? देखिए, if you're starting out, तो आप उसको सुने जो मेन स्ट्रीम ऑर्थोडॉक्सी के साथ है, ठीक है? मीनिंग someone who is extracting fawaid, extracting benefits, sharing the opinions of well-known mufassirin, ठीक है? And not using Shah's opinions, opinions that are not mainstream, and is using, mufassirin who are also not, accepted as orthodox. ठीक है? I know that's a vague term. तो अहमद, आप बेसिकली ये कह रहे हो जो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी आजकल के ट्रेंड का, बिकॉज पीपल जनरली लिसन टू दोज पीपल जिनकी कंटेंट में नोवेलिटी हो, समथिंग न्यू. ओके, देखिए, इफ यू स्टार्ट आउट विद दैट ना, फिर आप कभी कुछ सीखोगे नहीं. आपकी ग्राउंडिंग अगर इन चीजों पे हुई भी होगी ना, नई नई चीजों पे, कंट्रोवर्शियल चीजों पे, तो देयर इज नथिंग दैट यू कैन बिल्ड अपॉन. ठीक है? अगर आपने अपने उसूल ठीक रखे हुए हैं, तो फिर उसके ऊपर आप बाकी सब्जेक्ट्स भी जब पढ़ोगे और आरा भी लोगे लोगों की, तो फिर वो दिस इज हाउ वी लर्न एवरीथिंग. ठीक है? आप अगर देखें, आप मैथ के टीचर हैं, आप प्लस माइनस पहले सिखाते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई बाद में सिखाते हैं. आप फ्रैक्शन में पहले ही नहीं चले जाते. अगर आप पहले से फ्रैक्शन वगैरह के साथ खेलने लग जाओगे, तो आपको इट्स एवरीथिंग हैज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ every science. मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि a lot of people send me some video link कि जनाब listen to so and so person, okay, without taking any of the name. लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया लिसनिंग, तो पहले मैं YouTube पे हर स्पीकर को सुनना शुरू कर देता था.
because I was very naive. फिर मैंने जब कंपैरिजन किया तो मैंने कहा आई लिसन टू दिस पर्सन फॉर 30 मिनट्स, और उसमें मैंने सुना कि कुछ जोक सुने और बहुत कम हदीस सुनी। सो आई स्पेंड 30 मिनट्स ऑफ माई प्रीशियस टाइम। उसमें मैंने जोक्स तो सुने हैं, डिलीवरी स्टाइल भी बहुत अच्छा था, लेकिन जो कंटेंट मुझे मिला इस्लामिक वो बहुत कम था इन कंपैरिजन टू दो स्कॉलर्स जो बेशक आपको बहुत ज़्यादा ग्लैमरस ना लगे। Like I was sitting, I was listening to Tafseer of Sheikh Anas Madni. Okay, he is a very good scholar और तफसीर उनकी अवेलेबल है, मैं नीचे लिंक पे भी सेंड कर दूंगा, पूरी कुरान की है। There was one आयत जिससे उन्होंने पूरा का पूरा अनस मसला, हाफिज अनस नजर। हाँ जी, हाफिज अनस नजर, राइट। फॉर इंस्टेंस दिस वर्स इन द कुरान के अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं तो जिसको बेटा देते हैं, चाहते हैं तो किसी को बेटियां देते हैं, चाहते हैं तो किसी को मिला जुला देते हैं, और चाहते हैं तो किसी को बांझ रखते हैं, राइट। एक सिंपल सी आयत है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की डिस्ट्रीब्यूशन है, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ही ज्यादा खबरदार है, हकीम है, राइट। इस तरह की कुछ वर्डिंग थी। सो उन्होंने इस आयत को बोलते बोलते ये भी मसला छेड़ दिया और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि एज लॉन्ग एज मेडिकल ट्रीटमेंट बिटवीन अ हस्बैंड और वाइफ हो रहा हो किसी भी तरह का, राइट, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट हस्बैंड और वाइफ का हो रहा हो फॉर फर्टिलाइजेशन, तो दैट इज इस्लामिकली एक्सेप्टेबल। सो इट वाज जस्ट अ जस्ट, सिर्फ उन्हें शायद 30 सेकंड्स लगे ये लाइन ऐड करने में, लेकिन व्हाट आई लर्नड इज के वो इस तरह की तफसीर करवा रहे हैं जिससे वो फवाइद भी बताई जा रही है और फिक भी बताई जा रहे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है एक बंदे को कि वो ग्लैमर को छोड़ के किसी ट्रेडिशनल शेख की तफसीर सुनना शुरू कर दिया। देखिए, ट्रेडिशन से ना फ़ायदा ये होता है कि जो उलमा एक बाकायदा एक सिलसिले से गुजरे होते हैं और फिर तफसीर अपनी पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको सिर्फ तफसीर का इल्म नहीं है, उनको हदीस राइट, का भी है, फ़िक़्ह का भी है, सीरा का भी है, लुगत का भी है। ये सारे उलूम जो हैं उनके ज़हन में है तो जब वो बात कर रही हैं, तो इसलिए उनसे गलती का इम्कान कम होता है। इन उलूम के साथ साथ उनके पास उम्मत का इजमा भी जो है, एक तसलसल जो जा रहा है उम्मत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो भी उनके मद्देनज़र है। ठीक है, तो वो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो उम्मत की इजमा से या उम्मत का जो तसलसल जा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उससे उससे हट के हो। ठीक है, वेराज ये जो दूसरे स्पीकर्स होंगे इनका भी बहुत फायदा है, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, ये कुछ नई चीज लेके आते हैं जिसमें फायदा होता जरूर है, मगर इनके यहाँ इम्कान ज्यादा होता है कि ये गलती करें और फिक़ही लिहाज से कोई गलत बात कर दें, लुगत के लिहाज से कोई गलत बात कर दें, एक उम्मत का जिस चीज पे इजमा है उस लिहाज से कोई गलत बात कर दें। तो इफ यू मैं ये नहीं कहता, आई एम नॉट समवन हु, क्योंकि अगर मुझे भी कोई कहे ना तो मैं नहीं सुनता बात किसी की, कि अगर मुझे कहता नहीं नहीं इसको नहीं सुनना तो नहीं इसको नहीं सुनना यार, सुनो मैं no, no, देखो तो सही कह रही क्या। तो what we are trying to say is no, what people are, what we're trying to say is कि there's a methodology that is proper, और yeah, उसके अंदर you start with someone who has an holistic grasp of the subject। ठीक है, उसको तफसीर के अलावा भी बहुत उलूम का पता है और वो एक उम्मत की इजमा को समझता है, वो शाज ओपिनियंस नहीं लेके आ रहा। आप उसका पहले what, but I would like to add, मैं जो कहना चाह रहा था वही कहना चाह रहा था, because time is limited, okay, you just have 30 minutes, 40 minutes, हाँ 1 hour, बिल्कुल ठीक है। तो 1 आवर में वो वाला कंटेंट सुनो जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सको, बजाय इसके कि 1 आवर आप वो वाला कंटेंट सुनो जिसमें कोई बस रिमाइंडर हो या कुछ चीजें आप देखिए, बार बार। अब अनफॉर्चुनेटली ना ये दिस एंटरटेनमेंट वैल्यू भी आ गई है इसके अंदर। ठीक है, काफी लोगों की, या तो कि वो सीखने से ज्यादा एंटरटेन शायद ज्यादा होना चाहते हैं, और वो कंटेंट से ज्यादा शायद शक्लो सूरत और किस किस्म का के जोक्स हैं या किस किस्म का स्टाइल है उसके ऊपर शायद ज्यादा जाते हैं लोग, जो कि अपने अंदर से ये चीजें निकालनी चाहिए। आप कंटेंट के ऊपर फोकस करें and try to think of this as not an entertainment but some serious learning। ठीक है, दूसरा एक और जो फॉर एग्जांपल ऑनलाइन लर्निंग का एक मसला होता है ना, वो ये होता है कि there's so much material out there कि आप जंप करते रहते हो फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल विदाउट फिनिशिंग एनीथिंग, ओके, तो उसमें भी एक प्रॉब्लम होता है।
ओके सो अहमद, चलो तफसीर भी डिस्कस होगी। जो उसूल तफसीर है या जो साइंसेज हैं, हदीस साइंसेज या तफसीर साइंसेज, वो किस स्टेज पे बंदे को सीखनी चाहिए और कैसे सीखनी चाहिए? देखिए उलमा का बड़ा इख्तिलाफ है इस मामले में कि उसूल फ़िक़्ह पहले सीखनी चाहिए कि फ़िक़्ह सीखनी चाहिए पहले, क्योंकि ओके। उसूल फ़िक़्ह जो है फॉर एग्जांपल बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, तो ओके। वो आप सही तरह तभी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं जब आपने थोड़ी बहुत कुछ फ़िक़्ह पढ़ी हो। तो the methodology of the ulama is that they start with very basic mutun, very basic text, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास कल की पढ़ी है किताब छोटी सी। So this is a book that I have. It's a very small book. Okay? So it is Mutun Talib al-Ilm. Okay? So these are like small texts in seeking knowledge. So this is the first level. So these are like for example these are four books. Okay? And ये वाला first level है. ठीक है? ये yellow वाला. So for example in if I look at the contents of this book, it's got a basic text on Aqidah, or sorry, two basic or three basic texts on Aqidah and one very basic text on Hadith. ठीक है? So उसके अंदर अकीदे के अंदर वो नवाक़िदुल इस्लाम, क़वाइद अल-अर्बआ, ये दो बड़े बेसिक टेक्स्ट हैं, उसूल सलासा और अर्बईन नववी, ठीक है, हदीथ के अंदर। तो in the second level they have books on fiqh and usul as well. So if you really want to reach a level where you need to learn the usul and you want to learn sciences through classical texts, तो there is no doubt कि आपको उलमा की जरूरत है इसके लेकिन अंदर, कुछ ऑनलाइन मटेरियल भी जिस तरह इस्लामिक ऑनलाइन या फिर आपके पास फॉर एग्जांपल एक्सेस हो एक अच्छी ऑनलाइन रिसोर्स मटेरियल का जो आपको ये चीज़ें सिखा दें। फॉर एग्जांपल इस इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है, आई थिंक इसका नाम चेंज हो गया, इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हो गया। जी जी। उसके अच्छे कोर्सेज हैं फॉर समवन हु वांट्स टू हैव ए, इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। It's a very good option for someone who wants to have a good grounding in the language, and it's based completely in the English language. तो उसमें आपको अरबी की को खास, even though वहाँ पे अरबी के भी courses हैं, मगर everything is taught in English. तो Okay, in 30 seconds if you can just tell me कि कौन सी साइंसेस किससे पहले सीखनी चाहिए? अच्छा, so देखिए, you can learn, there is for example should you learn hadith first or should you learn fiqh first? Yes. There is no set rule. For example आप Okay. हदीथ का भी बिल्कुल बेसिक टेक्स्ट जो है अर्बाइन नववी तो भी पढ़ सकते हैं, और आप फिqh की फॉर एग्जांपल बुलुगुल मराम। बुलुगुल मराम चले, बुलुगुल मराम वैसे उम्दतुल अहकाम। in classically, Bulugh al-Maram and Umdatul Ahkam are books of hadith. Even though Okay. over here we extract fiqh out of them, but they are books of hadith. Books of Okay. fiqh would be books like Bidayatul Abid and Zad al-Mustaqni, Dalil al-Talib, these sort of books. So, for example, how they do it in Saudi, because their fiqh is based on the Hanbali madhab, they teach books like Bidayatul Abid. And Bidayatul Abid, for example, I've got it over here. This book here, it's been translated in English as well. So Can you share the link after this? Is it online? This book, I'm not sure if it's online or not. So this is, for example, a basic book on fiqh. Okay? And it's fiqh al-ibadat. ठीक है, तो fiqh al-ibadat है इसके अंदर, यानी तहारत के मसाइल, नमाज के मसाइल, तहारत के मसाइल, वुजू के मसाइल, नमाज के मसाइल, ज़कात, हज and siyam. ठीक है, so these are really basic level things that one needs to understand. इसके साथ साथ अगर आप हदीस की बेसिक टेक्स्ट लें जैसे उम्दतुल अहकाम, उससे आपको अहादीस मिल जाएंगी ऑफ फिqh रूलिंग्स, ठीक है,
And then you can also study something like Arba'in al-Nawawi and a book like Usul al-Thalatha on Aqidah. So these are there's no rule कि यार आप fiqh नहीं पहले पढ़नी, पहले अकीदा पढ़ना. आप बेसिक लेवल के ऊपर कोई भी ये साइंस उठा लें. अगर आपको if you can find a teacher who can teach you these any of these texts, so you can go start sit with him, or you know find lectures online. Arba'in an-Nawawi के ऊपर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, वो आप ढूंढें, you know कर लें. ये इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जो है इसमें आई थिंक इनके डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं. There's a free diploma course, वो बिल्कुल फ्री होता है, उसमें सारी होती है. There's a very very good selection of things that you can do. और मेरा ख्याल है उन्होंने उसको लेवल वाइज भी डिवाइड किया हुआ है. लेवल वाइज भी डिवाइड किया हुआ है, that is true. और अब हमारे यहाँ पे जो भाई हैं जो देख रहे हैं, अगर बिकॉज मैंने रिसेंटली उसूल सलासा जो है वो पूरी पढ़ाई है. मेरे पास कुछ आते हैं लड़के, we have a group of like 8 to 10 students, and we went over this book on Aqidah. So if there are people who are interested, I'm willing to give my time. Obviously there's no charges or anything, and we can go over a basic book or text on fiqh or hadith or Aqidah. Right. चलें, और उसके बाद तो ये साइंसेस होगी, एंड for to achieve that greater level you need to go to scholars. Okay. But since we are not going to achieve that level, we are not discussing about that. For a person who is foreign to this Arabic language, right, Arabic language, उसके लिए step क्या है? How can he learn Arabic sitting at home? वो कौन सी स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, कितनी देर लगती है, उसके बारे में मेरे नज़दीक ये सबसे मुश्किल मरहला है. ये this is probably the most difficult thing that people find, learning the Arabic language. And देखिए, you have to ask yourself कि आपका गोल क्या है to why do you want to learn the Arabic language? And most people would say कि कुरान समझ आए, कुरान और कोई भी बुक मिले उसको मैं पढ़ना शुरू कर दूं. So these are two different things. So for example, अगर आपका गोल है सिर्फ कुरान को समझना, तो वो fairly simple है, थोड़ी सी उसमें मेहनत है, and you will inshallah achieve that goal. But if your goal is to learn the Arabic language to a level कि आप कोई भी इस्लामिक किताब तारीख की हो, फिqh की हो, तफसीर की हो, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है और काफ़ी लंबा प्रोसेस है और काफ़ी डेडिकेशन मांगेगा वो. पहले आप छोटा इजी प्रोसेस बताएं, भगाएं ना लोगों को. तो इजी प्रोसेस जो है ना वो ये है कि आप बहुत बेसिक अरबिक ग्रामर जो है ना सीखें. एक छोटा टेक्स्ट लें. एक साहब हैं आमिर सुहेल साहब, आपको पता होगा, उनकी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, यूट्यूब पे उनके चैनल्स हैं. हाँ, उन्होंने कुछ, उनकी एक अपनी किताब है, उसका नाम है लिसानुल कुरान. जी. वो छोटी सी किताब है, उसमें आई थिंक 30 या 40 जो है उनके लेक्चर्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो ओवर समथिंग लाइक दैट, ठीक है, एंड यू अंडरस्टैंड दोज बेसिक रूल्स ऑफ अरबिक ग्रामर, एंड देन यू स्टार्ट प्रेफरेबली विद अ टीचर. मगर आपको टीचर नहीं मिलेगा तो आई थिंक देयर ऑनलाइन रिसोर्सेज एज वेल. फिर आप कुरान का तर्जुमा करना शुरू करें, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स को सुन के या किसी टीचर के साथ. तो it will take you some time to go over the full Quran, maybe about 2 years. But once you do that, तो with sheer repetition आपको काफी हद तक जो है ना vocabulary कुरान की समझ आ जाएगी, and आप you'll be able to understand what the Quran is talking about once it's being recited. आप कुरान सुनेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा. ये मेथड फॉर एग्जांपल अल हुदा ने, उनका जो कोर्स होता है औरतों के लिए, उन्होंने ये अप्लाई किया था. आई थिंक इस्लामाबाद में मर्दों के लिए भी होता है. So I think in about, if I remember correctly, in a 2-year period, वो औरतों को basic Arabic grammar in one year period. I think it's 1 year period. अच्छा, basic Arabic कवायद सिखा देती हैं औरतों को, और उसके बाद ये कुरान का तर्जुमा करना शुरू करते हैं. And they उनके बकायदा टेस्ट्स होते हैं इसके ऊपर. पहले पारे का टेस्ट है, दूसरे पारे का टेस्ट है. And I have seen some women, I know some women who are able to now understand the Quran. ठीक है, वो जब कुरान पढ़ा जा रहा होता है या जब खुद पढ़ रही होती है कुरान, तो उनको पता होता है कि क्या पढ़ा जा रहा है, वो माना समझ आता है.
even though they are not at a level कि आप उनको कोई अरबी की किताब पकड़ा देंगे या कोई अरबी का खुतबा सुनाएंगे तो उनको अरबी समझ आएगी, मगर कुरान की हद तक वो आ जाएगी उनको समझ। एंड आई थिंक पीपल हु डू नॉट वांट टू डेडिकेट सो मच टाइम अरबी सीखने में, उनके लिए ये मेथड बहुत अच्छा है और बहुत थोड़ी देर के अंदर उनको काफी फायदा हो सकता है इसका। Okay, we have a lot of questions, लेकिन वो यहाँ पे for some reason इस पोर्टल में नहीं आ रहे थे. So I'll read those questions to you. Momin Wright says that I try to read the translation of Quran, but I tend to forget the meaning. Right? That troubles me. Can you give me some advice for that? ये जो मोमिन ने बात की है ना, इससे मुझे मेरी अपनी एक अपना टाइम याद आ गया। यू नो आई रिमेम्बर कि मैंने पहली दफ़ा जब कुरान पूरा कवर टू कवर पढ़ा था तर्जुमे के साथ, तो आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू बी बोर्ड व्हेन आई यूज्ड टू रीड द कुरान। ठीक है, मैं और कोई किताब पढ़ता था तो आई वाज वेरी एंगेज्ड इन दैट बुक, बट वंस आई स्टार्टेड ओपनिंग द कुरान, आई स्टार्टेड फीलिंग स्लीपी एंड फीलिंग बोर्ड एंड आई वाज नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है इधर। एक तो शैतान है, आपने कोई खैर का काम शुरू किया, आपने कुरान खोला, तो एक तो शैतान का आपके ऊपर अटैक तो होगा ही। मगर उसके अलावा मुझे याद है कि आई यूज्ड टू रीड एंड सी वीडियोस ऑफ नॉन मुस्लिम who became interested in Islam, and they opened the Quran and they read the whole book in about a week, and they converted to Islam. मैं सोचता था यार ये लोग जो हैं कुरान को ऐसे पढ़ लेते हैं, पूरे हफ्ते में पूरी किताब खत्म कर देते हैं, मैं उसको खोलता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है या मैं बोर हो रहा होता हूँ। एंड the solution to that is कि just reading the translation maybe it's not giving you what you're looking for, तो आप try to uh, get good lectures। ये फॉर एग्जांपल हाफिज अनस नज़र जो हैं, इनके फरीद शेयर कर दें आप इनके साथ उनके जो लेक्चर्स हैं, try listening to his तफसीर of the Quran and see if it makes a difference। आप उनका लेक्चर खोलें, लेक्चर प्ले करें, साथ कुरान खोलें and try to see how much of a difference does it make that when you read the Quran on your own and when you listen to a lecture। And maybe you might not like, or you might not benefit a lot from his lecture, then try someone else who is mainstream as well। Okay, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ because a lot of people have this problem कि because we belong to elite families, हमने वो levels किए, तो ये बच्चे ना उर्दू से बहुत दूर भागते हैं, right? They run away from Urdu. Learning this language, Arabic language, from Urdu to Arabic, is it better than you learning from English to Arabic? Which one is more better and more easy? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन आपका कमांड किस लैंग्वेज पे ज्यादा अच्छा है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी उर्दू अच्छी नहीं है और आप उर्दू से अरबी सीख रहे हैं, तो शायद आपके लिए वो इतना फायदेमंद ना हो। अगर आपकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी है और इंग्लिश से आप अरबी सीख रहे हैं, तो आई सॉर्ट ऑफ यूज्ड बोथ अप्रोचेस। तो it depends on what language you are comfortable with। Okay, I'd like to ask you, Musab has named Dr. Israr, right? So he's saying that can I just start with his translation? जो उनकी longer translation है, minor है, शायद दोनों है। डॉक्टर इसरार के एक बयानुल कुरान है डॉक्टर इसरार का, which is it is a brief Dr. Seerah has many recordings on the Quran. So the one that is very popular is Bayan al-Quran, जिसका उन्होंने उसको किताबी शक्ल में भी शाया किया है, उनके लेक्चर्स को ना ट्रांसक्राइब करके they have published it in about 6 or 7 volumes। तो वो सीरीज इट्स वेरी गुड। बयान al-Quran बहुत डॉक्टर इसरार का अंदाज ऐसा था कि वो बहुत मौसर था, यानी it was very, he has a very powerful way of speaking। तो I personally would recommend कि हाँ जरूर आप Okay, like इसमें मुझे कुछ confusion ये है that there are certain things that any person would say to with his understanding, okay, about a certain verse, right? और डॉक्टर स्टार ने भी काफी जगहों पे कुछ ऐसा किया हुआ है, right? तो जो हमें क्लासिकल ऑर्थोडॉक्स कॉलेज में नहीं मिलता, लेकिन उनकी उसमें मिलता है। So how to make sure कि बंदा उस बातों से इन्फ्लुएंस ना हो जाए। देखिए फरीद, हमें ना थोड़ा सा अगलों का भी जो है ना
जहन और इंटेलेक्ट उसको रिकग्नाइज करना चाहिए। देखिए you can't live a life where you're protecting yourself from नहीं मैंने इसको नहीं सुनना, इसमें ये चीज है, उसको नहीं, नहीं सुनना, ये what चीज है। what what I'm trying to say is, नहीं, first, I understand कि what you're trying to say is just a कि second, just a second, just a second, just a second. Like leaving Dr. Star aside, uh, we are, because we are saying that, जो भी अच्छा scholar है उसको सुन लो. So someone who belongs to jihadi group will obviously quote more verses of jihad, right? How to make sure कि बंदा उस trap में ना आ जाए. उसके लिए तो फिर आपको उसूल तफसीर वगैरह या एक सर्टेन नॉलेज होना चाहिए. व्हाट डू यू रिकमेंड अबाउट दैट? देखिए जब जब भी आप पढ़ रहे हो ना कुरान को या किसी को सुन रहे हो, किसी आलिम को, तो अपने आप को हम्बल करने की ज़रूरत है, इन द सेंस कि आप जब किसी को सुन रहे हैं तो आप ये सोचें कि ये बंदा जो है ना ये बी ऑल और एंड ऑल नहीं है, ठीक है? सो दे कैन बी सम ओपिनियंस दैट दिस पर्सन इज प्रेजेंटिंग that others are not. So you have to, sort of use your intellect as well and see कि अच्छा यार ये यहाँ से ये बात कर रहे हैं, तो ये बाकियों ने ये बात नहीं की, तो कौन है? उसके लिए फिर आपको you need people who are learned and who have gone over that process themselves that can tell you कि नहीं यार डॉक्टर इसरार में या फॉर एग्जांपल नुमान अली खान में या मौलाना मौदूदी में या किसी भी आलिम में ये प्रॉब्लम्स हैं। बाकी इनका काम बहुत अच्छा है, इनका उन्होंने एक खिदमत की हुई है, इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। बस ये चीज़ें हैं जो इनकी ओपिनियंस थोड़े से शाज़ हैं। तो आई थिंक उसमें हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि यू हैव टू see it on a balance of You have to probability कि cross check, basically not get influenced or carried away किसी की तफसीर से. देखिए कुछ लोगों से मैं मिला, ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट था, वो नुमान अली खान उसके लिए था कि बस नुमान अली खान से जो है ना कोई नॉलेजेबल ज़्यादा है ही नहीं, और उसने अगर कह दिया तो बिल्कुल ठीक का है। तो it took him some time to realize कि नहीं यार, you know what, there's other people out there as well who have some sort of intellect, ठीक है ना, there's not only one person out there. तो उस मामले में थोड़ा सा you have to be a little more mature कि किसी को अगर आप सुन रहे हैं तो don't follow the person but the text, the Quran, But ठीक है? और जिसने जहाँ पे उम्मत का इजमा है किसी चीज के ऊपर, that stands much stronger than a personal opinion of someone, no matter how much you like that person. मगर दूसरी बात ये है कि आपने देखना है ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कि कौन से उलमा हैं जो उनका मेजॉरिटी काम जो है अच्छा है, और आई थिंक कि ये लोगों को पता लग जाता है। खास तौर पे जिन लोगों ने अपने ज़हन में एक उसूल बनाया हुआ है ना, और उसूल वो ये है कि भाई मैंने टेक्स्ट को प्रायोरिटाइज करना है, कुरान और सुन्नत जो है ना, नस जो है ना, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद किसी का कॉल है। तो ये अगर आप कायदा ज़हन में रखेंगे और फिर लोगों को सुनेंगे तो इंशाल्लाह खैर होगा। Okay, Momin Imran ka question, I have a question that this is something that may not be completely coherent with what we are discussing at the moment, but it is something very personally important to me. Translation of Quran that are more popular are towards the version of English. It sometimes get hard for younger people to get through, or maybe even extracting the meaning of certain translated verses. Should we stick to these translations that are more towards the ancient classical proximity to Arabic, or modern transcriptions are just okay? So basically, what he is trying to convey is that according to his understanding, जो English की translations हैं वो ज़्यादा authentic होती हैं in comparison to Urdu translations. And this is point number one. Um, Secondly, he is asking कि कौन सी translation ज़्यादा proximity के accordingly close हैं towards the truth. ये modern translations या ancient translations, यूसुफ अली की या बाकी translations या देखिए पिक्टोल. हाँ, अब ट्रांसलेशन में काफ़ी ज़्यादा वेराइटी है एंड Strong recommendation ये for someone, even for me, सही इंटरनेशनल की translation या डॉक्टर मोहसिन खान की translation, it's one of the best translations and one of the most easy translations to read, जिसमें कोई problem भी नहीं है. What's your opinion? हाँ जी, दोनों अच्छी ट्रांसलेशन हैं, सही इंटरनेशनल और
द नोबल कुरान जो है मोहसिन खान साहब की, उनके अंदर फ़र्क सिर्फ ये है कि the noble Quran, the one done by Dr. Mohsin Khan, it has a lot of parentheses, काफी ज़्यादा brackets हैं उनके अंदर, जिसके अंदर वो काफी चीज़ों को explain करते हैं. Some people like that, some people don't. It's a matter of preference. वो in a lot of matters it is helpful as well. Sahih International जो है, it's an effort, and it's a very good effort जहाँ पे they've tried their best to stick to the word for word translation and have not added anything in for example brackets, or have made the verses longer than they need to be. But at the end of the day, it's always going to be a translation, and it's down to one's preference. एक translation जिसकी मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है, मगर I haven't been able to get my hands on it because I wasn't. It was out of stock when I was, abroad, and I couldn't buy it. So वो है Doctor. I think it's Mustafa Khattab. It's called the Clear Quran. So I've heard a lot of praise for that work as well. But at the end of the day, it's down to a person's preference. Some people really like Yusuf Ali's translation. So it really depends. Moment, the What question is कि there is a translation by Talal Itani. I've never heard it, but there's some person Talal Itani. Do you know about him? nahi, I don't. Magar if he wants, I can have a look at it and sort of give my opinion. Moment, we don't know him personally, but we'll check it up and then let you know. Okay, so so what we were discussing was that someone who needs to learn this Arabic language. मैंने ये पूछा था कि जो मदीना अरबिक के बुक्स हैं जो बहुत पॉपुलर है, अगर वो तीनों बुक्स बंदा कर ले ऑनलाइन रिसोर्स से तो कितना आ जाती है, और अपनी जो स्किल्स हैं इस लैंग्वेज की उसको एनहांस करने का क्या तरीका है. नहीं कि मैं अहद करता हूँ कि मैंने 3 इयर्स में सीखनी है, ठीक है, मदीना अरबिक मैंने फॉलो कर ली और ऑनलाइन उसके रिसोर्सेज सारे देख लिए. एंड हम अभी बात कर रहे हैं किसी के बारे में जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में या बाहर नहीं जा सकता, अरब स्पीकिंग वर्ल्ड में. बिल्कुल 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 ठीक है. बिल्कुल. सो देखिए, यू हैव टू अपने ज़हन में आप सोचें कि आपका गोल क्या है. ठीक है. अगर तो गोल है कि आप अरबी कुतुब से फ़ायदा उठा सकें और किताबें पढ़ सकें, यानी फ़िक़्ह की और तारीख़ की और तफ़सीर की, that is a goal that is going to take you much more than 3 years, and it's going to be much more than a part-time commitment. ठीक है. This is not to discourage, but to tell you कि ये एक serious effort है, and इसमें वक्त लगेगा. Some people have a natural affinity towards learning language. कुछ लोग जो है surprisingly बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं ज़बान को, खास तौर पे एक unnatural method से जब सीख रहे होते हैं, यानी ग्रामर के थ्रू. मगर if you're a normal person like myself, you'll find it difficult. ठीक है. तो मेरा हमेशा एडवाइस ये है कि अपने गोल को आगे रखो, and try to see how much thirst you have. ठीक है. Some people are very determined, very thirsty. If you're one of those people, ठीक है, go full in. आप मदीना अरबिक करें, साथ साथ दुरूस सुने. उसके लिए there's a lot of resources. Inshallah, if any of our listeners are interested, they can contact us and contact me personally as well, and I can sort of give them a step-by-step plan on how they can go about. Magar if you, for example, just finish मुझे तो the पहले स्टेप बाय स्टेप प्लान दो. आप दुरूस लुग़त अल अरबिया खत्म करें पहले इंशाल्लाह. So I'll tell you what I did. So I finished दुरूस लुग़त अल अरबिया, which is the Medina books, the 3 Medina books. Then there is a series called Al Arabiyatu Bayna Yadayk. ठीक है. It's also 3 books, but now they've published it in a new publishing. It's 6 books now, but it's the same content. तो मैंने फिर वो कोर्स किया. साथ में मैंने I used to go to my teacher. ठीक है. And the advantage that you had was that you were surrounded with those people whose native language was Arabic. Like, if you would like to disclose some of your secrets,
Ahmed has told me कि जब ये यूके में था तो he was surrounded by Arab boys, कोई यमनी होगा, but their native language was Arabic. For 6 months he has been committed to himself कि मैंने अब इनसे communicate ही सिर्फ अरबी में करना है. Okay, so you were surrounded with that environment. लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में people are not surrounded with that environment. हाँ जी फरीद, उसमें मुझे फायदा हुआ जरूर, मगर आई डोंट थिंक it was very significant in my learning. What was Okay. significant was, for example, मैंने जब थोड़ा सा जब ये courses पढ़ लिए थे ना, so I had a general understanding of the Arabic language. Then I used to go to one of my teachers, ठीक है, वो इधर लाहौर में ही, and what I did with him was I would sit with him and I started reading, ठीक है, in Arabic, and he would correct my reading, ठीक है, and I would Okay. I can show you an example as well. For example, I have this book right here, ठीक है. I would let me see if I can get it better. For example, I have this book. This is a book on Tariq Okay. in Arabic, and I don't know if you can see it, but in the margins, I put a date, when I read this book. Just a second. एक second. Just a second. Okay. So in I would read this book to my teacher, and he would correct my reading and tell me what the meanings are. And in the margins, for example, I would write, like you can see over here as well in the margins. I've written in the margins. I would start writing, the meanings of words. Okay, and Right. For example, I would make flashcards like this, and Like you would do all the things we are for recommended to example, do. I have this word. What does it mean? It means to harvest. So I would make flashcards. I would read. I would. You have to do all those things that learning a लेकिन language मैंने requires. आपने ये भी बताया था कि आप कार्टून्स भी बहुत ज्यादा देखते थे. Yes, I started watching some cartoons in the Arabic language. I started listening to. I remember something that was very, very beneficial for me was very, very beneficial. I could feel it changed my understanding of the language. This is back in 2000 and I think 13 or 14. I started Okay. listening to debates in Arabic. So there was this Debates. debate series in between a Shia scholar and a Sunni scholar. All of us like these controversial topics. Okay? So I started listening to these debates, and they were like about 30 episodes, and each episode was about 1 hour 50 minutes. Okay. I remember going over all of them, and Were you able to understand those debates? या बस आपको टॉपिक समझ आ रहा होता था? I could understand them, and as I was going over them, my understanding kept increasing. Okay. So Okay. now what I do is I try my best to read a lot in Arabic and listen to durus in Arabic as well. So for example, if someone goes over the Medina books, they will only have a good understanding of Arabic grammar. Okay. ठीक है, that is sort of the first step. उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी in reading books. So for example, a very, very basic book is by Sheikh Hassan Abu Hassan Ali Nadwi, Yeah. Qasasul Nabiyyin. So this is also a Okay. book, that I read, and I started making notes on it. And so my advice is that if you're not prepared to go over if you're not prepared to put in a lot of effort, don't go this route. So what you're trying to say is कि अगर ज़्यादा पूरी proper effort नहीं करनी तो start ना करो. तो आप स्टार्ट करें, मगर आप दूसरा वाला मेथड यूज करें जहां पे आप एक बेसिक छोटी सी किताब में अरबी के कवायद वगैरह सीख लें और फिर आप तर्जुमा करना शुरू करें. देखिए, वो हमारे दोस्त हैं साकिब भाई, वो पे कोर्स करवाते हैं, आपको पता होगा, वो कुरान डायरेक्ट मेथड के नाम से कोर्स है. अभी आजकल भी उसकी भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह. हाँ, तो उसका कोर्स वो बहुत बेसिक एक कोर्स है, बहुत बेसिक. आपको अलामात के जरिए वो कुरान के कुछ अल्फाज की आप पहचान कर सकेंगे, और उसके बाद आप सिर्फ तर्जुमा करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत फायदा होगा.
I think that is a much more practical use of your time in terms of learning, and one that a lot of people will be able to do. ये वाला जो मेथड है ना कि आप पहले दुरूस लुगतुल अरबिया से जाएं, तो बेन एक पढ़ें, फिर आप दुरूस सुने, और फिर आप किताबें पढ़ें. It's a very long and tedious process. Okay. Okay, there's a lot of I can see a lot of messages that have suddenly come. Yes. So these were the messages that have come, but I think there's no new message. Um, okay. Hisham has asked about Mufti Taqi Usmani's tafseer as well, and it is a very good tafseer. I've read it, and it's something good and something that one can benefit from, inshallah. आप पढ़ें उसको, inshallah. Okay. I'm going to take this question. जी ये रिप्लाई करें जरा. So, Azim Sarfaraz. So according to, we should not listen to Javed Gandhi sahab. Um, as a start, no. If you want to learn about what the religion of Islam is saying, then you go with people who represent the Islam, or the ijma of the ummah, of the scholars. Once you've gone over them, once you understand them, then you can see what sort of opinions Javed Ahmad Gandhi Sahab has, and then you can make a judgment on where he stands with some issues. But Okay. as a start, Walaikum assalam. I would like to show everyone's message. Raid has said, "Hello, Sir Farid and Sir Ahmad Khan. Assalamu alaikum wa alaikum assalam." Like I'm the one saying salam and wa alaikum assalam myself. Okay. Okay. Some of the key things as a student of knowledge, you need to be regular. You need to be consistent. कितना रोज का time देना चाहिए अपने आपको in seeking knowledge? I think there's one thing that we've not mentioned, and that is something that is very, very important. And वो ये है कि before anything else, you should make sure that you're someone who prays 5 times a day on time, Yeah. preferably in the masjid. ठीक है? अगर आप ये नहीं कर रहे और आप जितना मर्जी पढ़ लें, आपकी पढ़ाई में कोई बरकत नहीं होगी, and you won't see and you won't feel that you are getting anywhere. Having a strong connection with Allah is the most important thing. Okay? Having a strong connection with Allah, having good intentions, and then going on this journey, then you'll get anywhere. Magar agar aapki, you're someone who's struggling to establish prayer, then you need to work on someone who can pray regularly and make dua to Allah that He makes this journey easy for you. Only then can you start benefiting, inshallah. So, there needs to be a wird of the Quran that you recite every day. ठीक है? कुरान ऐसी किताब है जो कभी नहीं होनी चाहिए. अगर आपने कुरान पढ़ना सीख लिया है या सीख रहे हैं, recite at least 5, 10, 20, however much you can in your day. ये कोई भी नहीं कह सकता कि मैं इतना बिजी हूँ कि मैं कुरान खोल ही नहीं सकता. I don't believe that anyone is so busy that they can't open the Quran and recite maybe 1, 2, 3, 4, 5 pages. So you have to recite the Quran. The Quran should be your main focus, and you will see कि आप अगर अपनी नमाजों में पूरे होंगे, अपने नवाफिल में, अपने अज़कार में, अपनी दुआओं में, अपनी कुरान की रेसिटेशन में पूरे होंगे, तो अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत ऐसे डालेगा कि आप बाकी चीजें भी कर सकेंगे साथ साथ. Right. Okay, Ahmed, thank you so much for your time. Would you like to say something more? Alhamdulillah, if anyone has any questions, then they can send their questions on the page, and inshallah we can try our best to reply to them privately as well. Okay, I have an announcement to make कि मैं next time से अपनी profile से आऊँगा live because we only have 300 likes on this page because it's a new page. So then we are going to upload the lecture
into this page. Ahmed, thank you for your time. Or Jazakallah. Thank in you for the inviting. end, like the right intention is not to become popular. या हमारी बहुत ज़्यादा fan following होगी, हमारे 2.5 मैं million. तो खैर आप कह रहे थे शुरू में मैं छुपा हुआ एक वो जेम तो नहीं मैं कहूँगा मैं मगर आपने मुझे जाहिर किया है तो because I knew you, मुझे पता था, alhamdulillah. And one another thing is that I've requested ML to have a series on prophethood, right? On a Seerah series. So inshallah, Ahmed is going to start on this. Thank you, everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जज़ाकल्लाह खैर। Thank you for your time. Inshallah. Okay, वालेकुम last announcement that I'm planning to have a webinar with Subur Ahmed of FIRA. So at 2 o'clock, most likely, he's just messaging me right now. So we are going to have that webinar tomorrow, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. इसके नीचे कमेंट करें कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं इनके साथ.